Hi, dear friends. This is Dr. Asit Khanna. I'm a senior interventional cardiologist at Yashoda Hospital, Kaushambi, Ghaziabad. And today I'll take a few minutes of yours to tell you about something which is very commonly overlooked or relegated to the background. And that is the non-invasive cardiology support department for a cardiologist or a department of cardiology. No department of cardiology can exist or claim to function normally without a non-invasive cardiac department. What exactly is non-invasive cardiology is that part of our department which caters to the non-invasive or non-interventional part of cardiac imaging, specifically the ECG, the echocardiography, the treadmill testing, the Holter, even the pulmonary function test, and a few other miscellaneous tests. Now, these tests are also headed by a cardiologist in our place, and they are done at a separate place other than the cardiac cath lab. They form the basis where we send all our patients from OPD for the initial checkups, whether it is ECG or an echocardiography, which is an ultrasound of the heart, the treadmill test where the patient is asked to exercise. This is of two types. If the patient is able to run, then it is called the treadmill test. If the patient is not able to run, say because of pain in the knees, then we go for a pharmacological stress test that is called the dobutamine stress test. And then we have the Holters. Holter is a 24-hour ECG which is attached to the patient, and the patient is asked to go home. Patient can let the Holter monitor his or her rhythm for 24 hours. We have state-of-the-art non-invasive cardiac facilities in Yashoda Kaushambi because we have Holters from 1 day, 2 days, 3 days, 7 days, 14 days, 28 days, and even further. So if anybody has a rare rhythm problem of the heart which is manifested very occasionally, then we can have them implanted with extended loop recorders also, and they can keep recording the patient's rhythm. That is called extended Holter or extended loop recorders. So a person who has come to a cardiac OPD enjoys all the facilities that a non-invasive cardiac setup has anywhere in the world. एंड उसमें जो हम इलाज के साथ साथ आपको पहले डायग्नोसिस बनाने में जो स्पीड होती है उसको हम बहुत तेजी से दे सकते हैं. मान लीजिए somebody comes to the ECG, वहाँ ECG से हमें कुछ पता चलता है, उसको हम इको बताते हैं. इको भी कई टाइप्स के होते हैं, इको 2D, 3D, transthoracic, transesophageal, pediatric ecos. We have pediatric cardiologists with us, we have adult cardiologists with us, एंड हमारे पास अलग अलग तरह की जो फैसिलिटीज हैं उसमें एक पेशेंट का कंप्लीट कार्डियक डायग्नोसिस बनाने में हमको ज्यादा देर नहीं लगती. और उसमें से फिर जिन पेशेंट्स को कॉर्नरी एंजियोग्राफी या पेरिफेरल एंजियोग्राफी या पेस मेकर्स, मान लीजिए डिवाइस रिदम में प्रॉब्लम पकड़ में आई, हार्ट रेट बहुत स्लो है, ब्लॉक्स हैं, साइनस ब्लॉक्स हैं, साइनोएट्रियल ब्लॉक्स हैं, एवी ब्लॉक्स हैं, तो उसको हम पेस मेकर किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं? बाय द बेसिस ऑफ होल्डर. So by using all these state-of-the-art technologies, latest Philips and GE echo machines, whether it is TEE or 3D echo or strain rate imaging or tissue Doppler, ये technical terms है for the best of the best imaging modalities of the heart. इससे आप diagnosis बना के patient को जल्दी से जल्दी उसका treatment कर सकते हैं. उन patients में से select कर सकते हैं किसको एंजियोग्राफी की जरूरत है, किसको एंजियोप्लास्टी की जरूरत है, किसको किसी चीज की जरूरत नहीं है. कई पेशेंट्स पेन लेके आते हैं, हम बताते हैं आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एंजाइटी के पेशेंट्स होते हैं, उसमें हम छाट सकते हैं. सो व्हेनेवर यू कम टू द ओपीडी, यू फर्स्ट गो टू द नॉन इन्वेजिव लैब एंड देन ओनली यू प्रोसीड फर्दर. फॉर एनी काइंड ऑफ नॉन इन्वेजिव कार्डियक टेस्टिंग, you can visit Yashoda Hospital, Kaushambi anytime. Thank you.